All right. Welcome everyone to Menace and the Monk. This is a very special day. This is absolutely brilliant. We have official confirmation from the club. This this escalated very fast. We woke up after a win against Villarreal, and उसके बाद सुबह में news आई कि there is a chance कि Klopp might extend his contract, and absolutely it has happened. And we are alone today. I'm doing this live alone today. Manas is on a break, of course. So whoever is watching, please put up your comments. And basically I'm going to be speaking with you guys. मैं आपके points लेके discuss करने वाला हूँ. तो आप बिल्कुल अपने points डालिए. ये बहुत लंबा live हम नहीं करेंगे आज, क्योंकि मैं अकेला हूँ. तो there's nobody to bounce ideas off. But if anybody wants to come on the live, more than happy to do that. Just DM us on Twitter. I'll keep checking and put it here if you want us to, want to come on the chat and talk to us. आयुष लाला सेज लंबा लाइव करो. लंबा लाइव कैसे करें आयुष? काम भी करना है, सोना भी है, कल भी काम है. तो काफी काफी काम है यार. लंबा लाइव कैसे करेंगे? All right. Ronak says came from Indie Cops channel. Hello, hi Ronak. How are you? Thank you for your kind comments on Indie Cops channel. It's obviously always great. जितने ज़्यादा लिवरपूल फैन से हम कांटेक्ट कर पाएँ, जितने ज़्यादा कम्युनिटी में ले पाएँ, बहुत अच्छा लगता है यार. दिस इज रियली गुड. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन हियर एज वेल. Great news. I think now high profile players will take a serious look at our project and would be willing to mold their wage requests for a chance to get mentored by Klopp. Tanish, that's a very good point. That is correct. I think that Liverpool, एक टाइम था यार जब हम अलेक्सिस सांचेज, याद है आपको? जब ब्रेंडन रॉजर्स ने बोला था कि प्लेयर्स डोंट वांट टू come to Liverpool the city. And उतना lucrative एक टाइम पे हम नहीं थे. And now look at us. I mean, you name it, most players, if you say Liverpool, they have something positive to say about us. So yeah, ये बहुत सही point है. ये बिल्कुल भी possible है. And let's hope what happens. But I think we already have a very special group of players already, at Anfield, at Liverpool. So brilliant. um, निश सेज कल जब क्लॉप को इतना खुश देखा था एनफील्ड पर, तभी पता चल गया था एक्सटेंशन होगा. निश इज समवन दैट कीप्स गोइंग टू एनफील्ड. तो काफी स्पेशल है यार निश. ऑब्वियसली बड़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा था. क्लॉप लव्ड इट. एंड वी हम तो क्लॉप के भक्त हैं ही, उसमें क्या डाउट है. Sayam says, how do you see the future of Premier League after this renewed Ten Hag in Pep with an option of staying with Tuchel with a big project? यार Premier League right now तो काफी ज़्यादा lucrative है. It is absolutely brilliant जो भी Premier League में चल रहा है. Two of the best managers, Pep and Klopp, are already here. There is football में anything can happen. And there is a chance that Pep also extends. Let's see what happens there. But this live is about Klopp. Ten Hag, absolutely, an exciting up and coming manager who's going to join from next season. तो बहुत ही exciting time है यार. सही है. Future of PL is very very bright according to me. Where is other guy? So he is on a break. He'll join us from next month onwards. Ayush says Mo Bobby Mane signing next. Yeah. Let's hope. If this happens, is going to be brilliant. आयुष, by the way, हमारे लाइव पे एक बार आया था और उसने बोला था कि लिवरपूल will win the title this time. तो I'm holding you for that, आयुष. देखते हैं क्या होता है. Let's take a few more comments. Here, the other guy is here. जो भी पूछ रहा था, the other guy is here. All right. Okay. What a time to be alive, indeed, yeah. Uh, Great news on an absolutely boring day. This was great to hear about Klopp's renewal. Theo, यार boring days कैसे था यार? हम अभी तो we won against Villarreal. We have played the Champions League semi-final. Boring day. अच्छा यार, चलो मैं मजाक कर रहा हूँ. Klopp is happy, fan base is happy, no doubt about it. Nidhi bhai, remember during your post review on United versus Liverpool, recently I said that Klopp, I hope Klopp extends his contract, and he did. बिल्कुल यार, absolutely brilliant news. ये तो यार बहुत ही ज़्यादा exciting news है as Liverpool fans. मतलब बहुत ही
दिस इज लाइक होपिंग फॉर समथिंग जो आप मतलब उम्मीद से दुगना, पता नहीं किसका ऐड था ना एक, तो वैसा था ये। हम साला साला कर रहे थे, एंड दिस इज आई एम श्योर देयर विल बी सम कमेंट्स अबाउट साला एज वेल, तो वी विल टेक दोस। धेनुका इज हियर। हाय धेनुका। जासिम हाय। साहिल हाय। Can we create a legacy like Sir Alex Ferguson with Klopp? Let's retire him in our club. यार ये तो मतलब कि I think this is the dream of every Liverpool fan कि कि क्लॉप यहाँ पे रिटायर हो जाए, बट आई थिंक एलेक्स फर्गूसन का टाइम अलग था, वो उस टाइम पे फुटबॉल काफ़ी अलग हुआ करता था। आज फुटबॉल काफ़ी अलग है। तो आई 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 डोंट नो, आई डोंट वांट टू कंपेयर क्लॉप्स रेन विथ सर एलेक्स फर्गूसन, एंड मतलब देखते हैं क्या होता है। चैनल पे प्रेडिक्ट किया था क्लॉप विल एक्सटेंड एंड हो गया, मजा आ गया भाई। हाँ भाई, आयुष लाला हमारा रेसिडेंट ये है, हमारा रेसिडेंट पॉल दी ऑक्टोपस है। ओके, नाउ डोंट बी सरप्राइज्ड इफ मो साला साइंस हिज न्यू कॉन्ट्रैक्ट सून आल्सो। यार ये तो अगर आप देखोगे ना, इफ यू लुक एट आवर लाइव जस्ट बिफोर द एवर्टन गेम, मैं और मानस लाइव गए थे, उसमें मैंने ये बोला था और मैंने पढ़ा था ये कि यार what Mane, sorry, Salah wants is basically we will try our best to um, extend Klopp's contract. और मैंने ये बोला था कि obviously this is not something that FSG per se will have a problem with. FSG will absolutely love it if हम Klopp का contract extend करते हैं, और वही हुआ। I think this was, these two are sort of इंटरकनेक्टेड। तो देखते हैं क्या होता है। होपफुली साला आल्सो साइंस, एंड डेविड मैडॉक का ट्वीट था यार आज, मैंने देखा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि तीन चार पॉइंट्स हैं, तीन चार नहीं, पांच छह पॉइंट्स हैं, एंड ऑल दोस पॉइंट्स आर डिलाइट टू रीड एज अ लिवरपूल फैंस। उसमें था कि साला एंड माने का एक्सटेंशन उसको चाहिए, ये बेसिकली क्लॉप के वजह से इन्होंने किया है। क्लॉप ने ही इनिशिएट किया था ये एक्सटेंशन, और इसमें और भी एक्सटेंड करने के चांसेस हैं। तो यार दिस इज ऑल गुड न्यूज़, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, लेट्स टेक अ फ्यू मोर चैनल्स, sorry, comments. How do you see the effect of Eddie Howe and his Newcastle? How does it Klopp's future coincide with other coaches? यार देखो, Eddie Howe was brought to Newcastle for basically keeping them in the league, and he has done that, and he has done that fantastically well. Obviously Newcastle काफी ज्यादा ambitious है, उनको इससे काफी ऊपर जाना है ऐसा लगता है। If you look at Newcastle, and if you look at what they want to do, क्या is Eddie Howe the man to take them to the top? अभी जॉन्जो शेल्वी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में he said that this club will be massive, and he compared Newcastle's future to PSG and Man City's future. So uh, is Eddie Howe the man to get them there? Maybe I don't know, but I have a feeling that in the summer they are going to go for a bigger name, and obviously money is not going to be a problem for them. तो मतलब देखते हैं। हाउ डज क्लॉप्स फ्यूचर कोइंसाइड विद अदर कोचेस, मतलब मैं ये एग्जैक्टली समझा नहीं दिव्यांश। मतलब आई थिंक obviously one of the things is his great rivalry with Pep Guardiola, and Tuchel has been, these three I think right now are the biggest, is the biggest rivalry in the Premier League. तो मतलब Tuchel ने भी कल बोला है कि he plans to stay at Chelsea. I won't be surprised if Guardiola also signs an extension. तो Premier League तो काफी ज्यादा competitive होने वाला है। ड्रॉग बाबा, अरे यार देखो, कोई कर सकता है यार क्रिटिसाइज, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, नॉट अ बिग डील, ही कैन डू इट, इट्स हिज ओपिनियन। हेलो निधि भाई, होप आई एम डूइंग वेरी वेल यार। राहुल, थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अगेन। आज आई वांट टू डांस द होल नाइट। हाँ जी, बिल्कुल डांस करिए आप, ये तो डांस करने वाला भी है टाइम।
Abhishek asks, do you think we need to sign a defensive midfielder or central midfielder? Chomini is a DM. Thoughts? We need a Thiago type player in mid. Um, यार सी देर आर सर्टेन प्लेयर्स हमारे जो क्लब में हैं जो काफ़ी क्लॉप उनको काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट करता है। उसमें से एक है टाइलर मॉर्टन। अभी टाइलर मॉर्टन डीएम है, सीएम है, एग्जैक्टली पता नहीं। वी आर ट्राइंग टू मोल्ड हिम इनटू समथिंग ऑफ 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 अ प्लेयर दैट वी प्ले रेगुलरली। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड अ सेंटर मिडफील्डर मोर। आई आई एग्री विथ यू अभिषेक, बिकॉज Thiago is 30 plus, Henderson is aging, Milner is towards the fag end of his career. तो मुझे भी ऐसा लगता है, but we don't know. I certainly think टाइलर मॉर्टन ज्यादा खेलने वाला है आगे के टाइम में। सादियो माने इन द चैट एंड ही सेज आज रोजा तोड़ने में अलग ही मजा आ गया। कल का गोल कैसा लगा? कल का गोल बहुत ही सही था सादियो माने जी, बड़ा मजा आया देख के। हाउ कम दिस साइनिंग वाज सो क्विक? यार साइनिंग वाज सो क्विक because basically Klopp, इट्स लाइक व्हाट आई सेड राइट, क्लॉप को तो करना ही था ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एफएसजी के लिए तो दिस इज लाइक दे वुड लव टू। दिस इज लाइक अगर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एक रेज देना चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ना। वो कॉन्वर्सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि आप तो हाँ ही बोलोगे। तो ऑब्वियसली क्लॉप ने बोला कि आई वुड लाइक टू, जैसा मैट, और ये मैं आई एम गोइंग बाय व्हाट डेविड मैडॉक सेड। जैसे ही क्लॉप ने बोला कि I want to extend. I think FSG were more than happy to extend. Um, okay, let's take a few more. Uh, pen. Chandra is here. Hi, Chandra. What a time to be alive. Salah potentially signing in, Klopp signing in, Shomini potential signing. और Shomini के बारे में एक comment था. Let's take that. Chomini rumors. What do you think? Something. हाँ ये रहा. यार इस दिस इज गैदरिंग पेस। दिस इज डेफिनेटली गैदरिंग पेस। ये आज पॉल जॉयस ने भी बोला है। पॉल जॉयस जनरली बोलता है, मतलब पॉल जॉयस जनरली बातें तब करता है जब कुछ सब्सटेंस होता है बात में। तो क्लियरली दिस इज समथिंग दैट पॉल जॉयस ने कहा है, तो कुछ तो बात होगी। अभी ऐसी भी न्यूज आ रही है कि रियल मैड्रिड डोंट वांट टू गेट इनटू अ बिडिंग वॉर with Liverpool or anybody for that matter, because they are reportedly the other club in for Aurelien Tchouameni. Um, देखते हैं यार। आई मीन अभी वी डोंट नो। अभी अभी ट्रांसफर विंडो काफी दूर है, और मतलब अभी तो हमारे पास मतलब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैचेस बचे हुए हैं देखने के लिए। Dhenuka is here, and Dhenuka says Real Madrid is apparently not keen on Chomini. He's not a priority, it seems. I agree. I think Real Madrid will try to go for players in the front, because as good as Benzema is, he's also aging. They want a younger forward, which is why you have Kylian Mbappe already joining in. तो देखते हैं क्या होता है। आई डोंट वांट टू फोकस टू मच ऑन ट्रांसफर्स एटलीस्ट नाउ एट दिस पॉइंट। who do you think has a better chance of signing for Liverpool, Chomini or Bellingham? I don't know, yaar. I think Chomini at this point in time, it looks like some a player that is more likely. Bellingham के बारे में मैंने और बहुत सारे लोगों ने हमेशा ये बोला है कि Bellingham अगर साइन हो रहा है ना, इसका मतलब वन ऑफ दोज फाइव, एंड आई एम नॉट काउंटिंग ओरिगी एंड मिनामिनो इन दैट। ओरिगी तो डेफिनेटली जा रहा है। मिनामिनो भी मुझे लगता है कि अगर वी गेट अ गुड ऑफर फॉर हिम, वी माइट इवन कंसिडर सेलिंग मिनामिनो। बट अगर बेलिंगम का जो प्लेइंग पोजीशन है, विच इज अ नंबर 10, दैट इज नॉट अ पोजीशन दैट वी प्ले इन इन लिवरपूल सो मच, राइट? तो अगर बेलिंगम आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि देर इज अ चांस दैट वन ऑफ द फाइव, बेसिकली साला, माने, फर्मिनो, डियाज, जोटा, एंड उन पांचों में सबसे ज्यादा चांसेस जाने के साला, माने और फर्मिनो के ही हैं, बिकॉज डियाज और जोटा तो रिसेंटली आए हैं। तो आई थिंक वो है। तो इनमें तो मैं बोलूंगा। बाय द वे गाइस, यू डोंट यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट क्लॉप? अभी मतलब आई नो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर्स एंड एवरीथिंग, बट यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट क्लॉप? जॉयस को मैंने टेक्स्ट किया था, जो हाँ लाला बिल्कुल।
What do you think is Bobby's future at the club? Personally, he was my favorite player, and I don't want him to go. But considering signing of new forwards, I think his time at the club is for not long. यार देखो, मेरा तो फेवरेट प्लेयर है बॉबी फर्मिनो. आई एब्सोल्युटली लव बॉबी फर्मिनो. बट आई डोंट नो यार. आई रियली होप दैट ही डज नॉट लीव द क्लब. बट एक चीज एक बार समझनी पड़ेगी कि you know Bobby, I think he'll have to accept that his role moving forward in the future seasons will be reduced. वो उसको समझना पड़ेगा. If Bobby is okay with that, then he can stay on. Obviously, any Liverpool fan would love to have someone like Bobby Firmino in the team. He's an absolute asset. But yeah, I agree with you, Irfan. Maybe he considers, maybe he says, keep, I have the last big contract. There's a World Cup year coming on. He might just consider a move. And that will obviously not feel nice to see as a Liverpool fan, but who knows what happens. Um, Bellingham 2023 is a high possibility. I don't know. Um, Rumors are Man City are going to sign Erling Haaland next summer. What should Liverpool do? यार, हमको अभी फॉरवर्ड साइन करने की मुझे तो नहीं लगता है वी नीड एनी न्यू फॉरवर्ड्स. बिकॉज हम यार मतलब हम वी आर ब्लेस्ड विद द काइंड ऑफ फॉरवर्ड लाइन वी हैव, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. यूरोप में मुझे लगता है कि one of the best, front. That's what I'm saying. So um, I think that we have already started strengthening our. I think the squad at this point हमारा strongest है, जो हमने देखा है क्लॉप के अंडर. तो एक दो चीजें इधर उधर मुझे लगता है एक कुछ छोटे ट्वीक्स करने की जरूरत है, उसके बाद हमारा स्क्वाड काफी स्ट्रांग हो जाएगा. बट आई एम सरप्राइज यार, देयर आर वेरी सो फ्यू क्वेश्चंस अबाउट क्लॉप. एंड I mean, it's this again so much about transfers. Um, Virgil van Dijk is on a yellow card, and if he gets a yellow card in the second leg, he will miss the final. No, he won't. Sasim, what happens is these are reshuffled, and he won't miss the final. That is, if he gets a yellow, he does not, because it's the counter starts. Okay, let's take a few more. ओके. हाँ, चलो एक फाइनली मोमेंट आया क्लॉप के बारे में. आई वांट टू टॉक अबाउट क्लॉप टुडे. आई डोंट वांट टू टॉक सो मच अबाउट ट्रांसफर्स, एंड इट इज अबाउट डार्विन नूनेज एंड बेलिंगम एंड एवरीथिंग. फेवरेट मोमेंट अंडर क्लॉप. Obviously, yeah, for me, for most Liverpool fans, it has to be when we won the Premier League. वो एक चीज़ थी जो हमने बहुत ज़्यादा टाइम से, हम मतलब एज लिवरपूल फैंस हम बोलते थे कि यार बस एक प्रीमियर लीग जीत जाए, बस एक प्रीमियर लीग जीत जाए. और वो फाइनली हुआ. तो वो तो मेरा फेवरेट मोमेंट था क्लॉप के अंडर. दैट आई थिंक, when did we know? I think we knew it when Salah scored that goal against Man United, that we are most likely going to win the Premier League this time, and that is something that was great to see. So that's my favorite moment against under Jurgen Klopp. Um, आज क्लॉप डे है दोस्तों. और गाफा स्टेइंग एब्सोल्युटली यार, चेन स्टूडियोज बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट डे है आज तो. मतलब मजा ही आ गया. उला चाची को धन्यवाद. बिल्कुल यार. देयर वाज दिस क्लॉप ने अपने इंटरव्यू में बोला कि व्हेन ही वाज हैविंग डिनर विद हिज वाइफ उला, एंड शी सेड दैट, do you believe you're going to leave this people in 2024? I don't see it happening. And that's when the first thought about extending the contract came in. So yeah, uh, absolutely, yeah, hats off to his wife. I think it was his wife who also said that you would not fit in at Manchester United. So definitely, yeah, we have to thank Jurgen Klopp's wife a lot. Um, Nabil says that run on the pitch to hug Allison when Origi scored. Yeah, यार क्लॉप के तो इतने सारे मोमेंट्स हैं, मतलब मैं थक जाऊंगा याद करते करते. बिल्कुल. Vignesh says Klopp's connection with the fans makes him even more special. That is absolutely something I agree with. In this day and age, it's very, very rare to see. I don't think we can find a single Liverpool fan
who does not love Klopp to bits? So this is, and this is special, and I'm sure that is true for some other fans as well, but fan clubs as well. But I think Klopp का जो connect है fans के साथ, the way he conducts himself with fans is absolutely special यार. Klopp is मतलब उसके बारे में हम क्या ही बोले. एक आयुष का क्वेश्चन है, काफी अच्छा है. What have you learned from Klopp over the years? Wow, that's a good question, yaar. I think the biggest thing I would say that I have learned from Klopp is the absolutely doggedness. आपको अगर याद होगा last season, um, Klopp lost his mother and he could not go and attend the funeral, and we went on that horror run where we lost 6 in a row. 6 मैच हम लगातार एक के बाद एक हार गए थे. उसके बाद एलिसन के हिज फादर पास्ट अवे और एलिसन नहीं जा पाया था. तो वहाँ पे दोज आर द मोमेंट्स, बिकॉज जब हम चैंपियंस लीग जीतने की बात करते हैं, प्रीमियर लीग जीतने की बात करते हैं, और जब अच्छे टाइम होते हैं तो ऑब्वियसली सबको बड़ा मजा आता है. बट वहाँ पे एक टाइम था जब हम्म, मतलब पर्सनली आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद क्लॉप. जब हमने दिखाया कि भाई ये क्या है, ये इंसान क्या है, और द हैबिट, द डॉगेडनेस, द एबिलिटी, द कैरेक्टर ऑफ नॉट गिविंग अप, दैट इज समथिंग, द बिगेस्ट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम क्लॉप. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग समथिंग, because to build something special you need determination, you need time. ये थोड़ा philosophical हो गया, but anyway, um, I still watch Klopp's first conference where he said that he should win at least one league title in 4 years. What a great run he has been. Lucky to witness Klopp era. Absolutely, yeah. In our lifetime is it is absolutely brilliant. Nidika in the house, Indie Cop. Which, by the way, go ahead and आपने तो किया ही होगा, but अगर किसी ने नहीं किया है तो please go ahead and subscribe to Nidika. Which player, according to you, Klopp has developed the most? That is a good question, Nitika. That is a tough question. I would say, um, I would say Robertson, and because, and I'll tell you why. Because Salah हमेशा से, there was, although Klopp के under he became an absolute beast, but he was pretty good at Roma as well, and Fiorentina before that. यार, but Trent is a child prodigy. I think Trent was a special player. We knew it. I mean, he's a generational player. Van Dijk again, very special defender. Thiago to again. I think Robertson का जो career graph रहा है ना, to at that age, and because Robertson, it's not like Robertson joined, जब उसने join किया था तो he was very young or something. तो जब रॉबर्टसन को डेवलप किया ना उसने, वो मेरा फेवरेट है. बट ये क्वेश्चन काफी टफ है यार. गाइस, व्हाई डोंट यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक इज, what which player you think Klopp has developed the best? Do you think Klopp's extension are something we will see often in years to come? Fergie didn't sign decade-long contract; he kept extending when winning. That is correct. That is correct, yeah, Nish. Let's hope so. Let's hope Klopp extends keeps extending his contract, and we get to see more of Klopp. That is obviously our dream as Liverpool fans. निधि भैया टी शर्ट दिखाना. टी शर्ट यार, ये दिस इज अ मेनेस इन द माउंट टी शर्ट, लुइस डियाज की. You guys, this is something that you guys can purchase. Just DM us. You guys can buy this. The strength and resilience Klopp has shown through the years is exceptional. Absolutely agreed. Um, Klopp will stay at Liverpool until 2028. Mark my words. Again, one extension remaining. Then Klopp as manager. Finish. He will retire. अरे बाप रे बाप, पता नहीं यार. देखते हैं. Um, Sai, first of all, thank you for the super chat. Thank you. That's really kind of you. Klopp's Europa League post interview is still the highlight of his tenure. Still remember the words. Yeah, Sai, that's a very good point. Yeah, I think हम हमेशा बात करते हैं. We keep talking about Klopp's high point and his witty responses and something. ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि Klopp का यूरोपा लीग जब हम हारे थे ना, that was our first big loss against under Jurgen Klopp.
ऑब्वियसली फिर हम चैंपियंस लीग फाइनल भी हार गए थे, और नेक्स्ट मतलब ही वाज सेलिब्रेटिंग विद द फैंस, which was another absolutely brilliant moment that we saw. विन के टाइम पे सपोर्ट करना और देखना काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड यू नो दोज वर्ड्स ऑफ कोर्स दे रिंग ट्रू इन एवरी लिवरपूल प्लेयर्स एंड एवरी लिवरपूल फैंस माइंड्स. आई थिंक जब हम बुरे सिचुएशन में होते हैं ना, तो क्लॉप से अच्छा मैनेजर कोई नहीं है. मतलब टू स्टीयर द एंटायर क्लब आउट ऑफ दैट, टू यू नो टू dispel the darkness, so to speak. Klopp is absolutely brilliant at that. So that's a really good point, Sai. Um, Jasim says, Nidhi bhai, today only I saw on FPL program they were discussing that if Van Dijk get a yellow, he will. I don't think so, but let's. mm, How does Klopp's extension impact Gerard's coaching career? I don't think they are interconnected here. Akshay, I think that Gerard at one point will manage Liverpool. And I hope that happens sometime in the future, because at this point मुझे नहीं लगता है कि जेरार्ड रेडी है लिवरपूल जॉब के लिए, बिकॉज लिवरपूल का जो जॉब है ना अभी, क्लॉप वेनेवर क्लॉप लीव्स अस, क्लॉप हमको काफी अच्छे पोजीशन में छोड़ के जाएगा. जेरार्ड स्टिल हैज अ लॉट टू लर्न, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव जेरार्ड, विच लिवरपूल फैन डजंट, बट अभी मुझे जेरार्ड नेक्स्ट मैनेजर लिवरपूल का नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक हमको अभी उसमें से ज्यादा अम, हमको मतलब वी वांट अ बेटर person to lead us after Jurgen Klopp. So I don't think these are interconnected, but that's my opinion. Sadio Mane asks, on a serious note, Nidhi bhai, how was watching Klopp live at Anfield? Um, the closest that you can come to watching God. I'm not a religious person. I'm not a religious man. But क्लॉप का तो मैं भक्त हूँ. तो इट वाज एब्सोल्युटली स्पेशल. इसको मैं वर्ड्स में कैसे बताऊं कि क्या है. Renuka says Klopp's take on vaccination was possibly one of the best, most sorted and logical ones. It takes guts to stick to your beliefs on topics where we can easily verify it. I admire that about him. So guys, I don't know if you guys अभी आपने अगर देखा है कि नहीं, तो जो लेबर पार्टी है ना यूके में, उन्होंने वो कह रहे हैं क्लॉप को कि you should try and get the British citizenship, and you know you should try to run for prime minister. We need leaders like you, ऐसा ऐसा वहाँ की लेबर पार्टी ने बोला है. तो हम तो ऑब्वियसली यार थोड़ा बायस्ड हैं क्लॉप के लिए, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फेयर. वी आर बायस्ड टुवर्ड्स यर्गन क्लॉप, बट सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं. ये बहुत सारे दूसरे लोग भी बोल रहे हैं. दिस इज ट्रू बाय द वे, यू कैन गूगल इट एंड रीड इट. तो क्लॉप यार, मैंने तो बहुत बार बोला है कि इट्स नॉट जस्ट द फुटबॉल, व्हिच इज व्हाट धेनुका इज आल्सो सेइंग. Absolutely leader of men, and he's one of the best personalities, so to say, right now. There's so much to learn from him. S. Gill says Klopp is very emotional. Is a very emotional person. He will stay with us for as long as he thinks is the right person for the job. Once he stops enjoying, he will walk away, and I will have no problem with that. I यार ये काफी fair चीज आपने बोली है यार गिल जी. um, ये 100% यार. I think if you stop enjoying what you do, then what is the point? And Jurgen clearly is someone that if he's not enjoying a certain thing, he will walk away, and uh, we can't fault him for that. um, थॉट्स ऑन चौमिनी न्यूज. हमने अभी बात की यार चौमिनी के बारे में. आई थिंक इट्स एक्साइटिंग. चौमिनी को मैंने बहुत ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा है, तो पता नहीं. गौरव पंडित, देखो भाई मैं लिवरपूल को पसंद नहीं करता, बट क्लॉप इज अ जेम. नो प्रॉब्लम यार. हर हर किसी का प्रेफरेंस होता है. हम भी कुछ क्लब्स को पसंद नहीं करते हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन यार. एंड थैंक यू सो मच फॉर सेइंग काइंड वर्ड्स about Klopp. Absolutely brilliant. I'm angry at Klopp because he latched on at Nidhi Bhai's job. Nahi bhai, Klopp is doing a job which is at least 500 times tougher than the job I do. यार तुम्हारा नाम बड़ा मस्त है यार. मतलब मैं हर बार हंसता हूँ यार. मस्त नाम रखा है तुमने. कहाँ से सोचते हो यार तुम लोग ये सब. um, S. Gill says Pep Linders is more deserving candidate than Gerrard at this point in time. यार ये ना
काफी कंटेंशियस पॉइंट है. मुझे, as much as I love Pep Linders, I think that Pep Linders is someone again that should not hand get the reins directly from Klopp. Again, Pep Linders is an excellent coach. He's the guy who actually coaches the team, and maybe he proves all of us wrong, and is an amazing manager as well. But मतलब मुझे अभी तो नहीं लगता है कि पेप लिंडर शुड प्रिसीड क्लॉप. Congrats on Klopp wishing for more trophies. Rocky Ronaldo says, we wish the same year. Good to see you, bhai. Good to see you. Join the live as well, यार. Sash Ecuador. Um, भाई आपका ट्रेंड इंग्लैंड के लिए अवेलेबल क्यों नहीं होता? इंग्लैंड, यार इंग्लैंड का सिस्टम बहुत अलग है. दे डोंट वांट ट्रेंड टू प्ले. दे ऑब्वियसली प्रेफर दे प्रेफर वॉकर. दे प्रेफर uh, वैन बिसाका. दीज आर द प्लेयर्स दे एक्चुअली प्रेफर टू प्ले. तो इंग्लैंड का सिस्टम ही काफी अलग है. दे आर अ वेरी डिफेंसिव साइड, और उनको वो डिफेंसिव फुल बैक की जरूरत होती है, which I think certain other players provide. So which is why I think Trent available नहीं है. And again थोड़ा मतलब ये मुझे मतलब लोगों को बुरा लगेगा, मतलब इंग्लैंड फैंस को. बट मैं क्लॉप से अग्री करता हूँ कि इफ यू हैव, एंड बीच में शायद गैरेथ साउथगेट ने बोला था कि ही वांट्स टू ट्राई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इन मिडफील्ड, एंड क्लॉप ने बोला था कि इफ यू हैव द बेस्ट right back in the world, why would you want to try him in midfield? And I agree with that, right? um, Absolutely. uh, did you see Pep's coach's voice today? By the way, he explained the tactics behind Liverpool versus Barcelona. नहीं यार, वो वीडियो मुझे देखना है. मैंने अभी तक देखा नहीं है. मैं देखूंगा वो वीडियो जरूर. पेप मास्टर क्लास. यस. निधि भाई, डेविड मैडॉक ने ट्वीट किया है क्लॉप इन. एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा था कि क्लॉप ने इनिशिएट किया है, एंड ही आल्सो टॉक्स अबाउट extending Salah and Mane. That is one of the things that is on his agenda. So absolutely brilliant. Nihal says Klopp is such a rock star, even United fans love him. Never before has this happened. Do you guys love him or do you guys admire him? But yeah, it's not hard to love Klopp. So I get it. Uh, Akshay says Trent is David Beckham in right back position. Interesting, interesting. Um, Arsalan says quadruple अभी बहुत दूर है. We have to be calm and cool. Yes, I totally agree with this, Arsalan. That's a very fair thing that you have said. Um, अभी मतलब यार देखो, क्वाड्रुपल क्वाड्रुपल हम बहुत बोलते रहते हैं, एंड क्वाड्रुपल एक टाइम पे मतलब इट विल बिकम रियल. अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट इज ऑलरेडी रियल. बट आई थिंक दैट हमको एट दिस पॉइंट, अभी हम न्यूकासल खेलने वाले हैं वीकेंड पे, which is a team in form. They are playing some amazing football. We have to be very good to beat Newcastle. So हम मतलब पर्सनली, that's my opinion, हमको बहुत ज़्यादा क्वाड्रुपल क्वाड्रुपल नहीं सोचना चाहिए. We have to just look at the next game. um, Next important contract, Salah and Mane. Yes, yes, I agree with this, Akhilesh. That is something that I think that is the news. Uh, that is the news coming on from everywhere. Um, that that Klopp will try that. Okay, we don't need to win the quadruple to cement our legacy. We know we are the best team in modern English football. The squad is dangerous. Yeah, Creator 99. Yeah, I agree with this. I think that we are playing some absolutely stupendous football. हम बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, और हम बिल्कुल ये बात से मैं अग्री करूंगा. बट आई थिंक दैट फुटबॉल में ना मैं काफी डिसअपॉइंट होऊंगा एज अ लिवरपूल फैन इफ वी डोंट विन any more trophies at the end of this season, because they are important. So I hope that we win more trophies. This is absolutely important that we do. So let's see what happens. भाई क्लॉप जर्मन कोच कब बनेगा? पता नहीं यार, फिलहाल तो लिवरपूल कोच है.
and we are absolutely loving it. Nidhi, come to TCSB someday as well. I'd love to hear. Please, let's do that. Let's do that. Everton getting relegated will be bittersweet. यार, हाँ, मतलब ऑब्वियसली बिटर स्वीट होगा, क्योंकि अगर वो रेलीगेट, इफ दे डू गेट रेलीगेटेड, तो हमको एक मर्सीसाइड डार्बी नहीं खेलने के लिए मिलेगा उसके बाद, तो वो बिल्कुल ही काफी बिटर स्वीट होने वाला है, बट लेट्स सी यार, आई थिंक उनका रन काफी टफ है, देयर इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट एवर्टन डज गेट रेलीगेटेड, बट क्या मजा आएगा, देखो. Nidhi bro, will Bobby Firmino renew? Can't see him leaving. He's better than Richarlison, Jesus, Lukaku despite getting less minutes. यार मैं तो फर्मिनो का बहुत बड़ा फैन हूँ यार, मतलब मुझे तो फर्मिनो इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स टू प्ले फॉर लिवरपूल. तो आई तो डेफिनेटली होप दैट ही स्टेज, आई रियली होप दैट ही कंटिन्यूज प्लेइंग फॉर लिवरपूल, बट देखते हैं यार, मतलब क्या होता है. Should we rest Virgil van Dijk in the second leg of the UCL semi-final since he already has one yellow card? नहीं यार, नहीं कर सकते वर्जिल वैन डाइक को रेस्ट आप. विलारियल बहुत ज्यादा अच्छी टीम है यार, वो अभी जेरार्ड मोरेनो वापस आने वाला है, और इट इज गोइंग टू बी, वी हैव टू प्ले, पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. हम नहीं रेस्ट कर सकते हैं चैंपियन सेमीफाइनल में, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. um, Do you think Klopp's new song triggered his contract? That is something only Klopp can tell you here. Um, Trent can't play for England because they don't have centre backs like Virgil van Dijk and CDM like Fab to play highline and handle counter attacks. Nor do they have keeper like Allison, who's best on one and saves. Yes, correct. Um, Thank you, yeah, TCSB. Um, so saw many comments on Buak today. I honestly feel after he left, we were more organized and managed the players well. ये यार अनमोल, ये आपने सही बात बोली है, कि मतलब बुआक जब गया था ना, तो काफी ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी क्लब के अराउंड, एंड काफी ज्यादा लोगों ने बहुत सारी चीजें बोल दी थी अबाउट दैट, कि अब हम वैसा फुटबॉल नहीं खेलेंगे और ये नहीं होगा. बट हमने जितनी ट्रॉफीज जीते हैं वो सब कुछ आफ्टर बुआक ही हुआ है. तो बुआक हैड अ बिग पार्ट टू प्ले इन आवर सक्सेस, but I can agree with what you're saying. We definitely have looked better defensively, but I think that has more to do with the signing of Van Dijk than Buak leaving. Everton have a real chance of winning silverware next season. That is championship. अरे यार, भाई सोचो, अगर जेरार्ड और आप कुटिन्यो आपको टाइटल जीतने से रोक दें. यार, जेरार्ड काफी प्रोफेशनल फुटबॉलर और मैनेजर है. एस्टन विला के साथ जो मैच है वो, मतलब हमको ये, लेकिन दिस विल बी हार्ट ब्रेकिंग. मतलब अगर अगर इफ एस्टन विला is the team where we drop points and that is where we lose the title, no, it is going to be very ironic and very sad. बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, मतलब that Gerard should not be the man to stop us winning the title. um, right. Can we talk about how Klopp was a major factor in hijacking the Luis Diaz move? यार ऑब्वियसली, मतलब आई थिंक दैट लुइस डियाज वाला जो मूव था वो, मतलब काफी ज्यादा, मतलब Luis Diaz wanted to come and play for Liverpool, and coming and playing for Liverpool uh, is connected with Jurgen Klopp. So yeah, absolutely, yeah, this is 100%. निधि भाई, आज वेस्ट हैम वर्सेस फ्रैंकफर्ट देखोगे क्या? नहीं यार, मैं नहीं देख पाऊंगा, मतलब रोज रात में जगना पॉसिबल नहीं है. Can we see Graham Potter at Liverpool someday? That is an interesting question. And I don't know, yeah. Graham Potter is obviously somebody who is highly rated, and काफी ज़्यादा उसके बारे में बात होती है इंग्लैंड में. He is one of the up and coming managers. Liverpool maybe, but not immediately. He has a long way to go before he comes and plays, manages someone like Liverpool. Um, your viewpoint on Thiago, Fabinho, and Kita. Where do you rate this midfield? I, yeah.
It is obviously, I think, a brilliant midfield. I think that this is the midfield which is the most mobile. I personally think mobility हमको सबसे ज़्यादा इस midfield से मिलती है. This is also the midfield that can unlock defenses very very quickly. That's my opinion on this particular midfield. However, in certain games, जैसे कल का जो गेम था जहाँ पे communication becomes very important amongst the players, वहाँ पे मुझे लगता है कि थियागो फेबिन्यो और हेंडरसन का मिडफील्ड बेस्ट है. और एक और चीज़ है अबाउट हेंडरसन, ये कल से काफ़ी बात चल रही है कि हेंडरसन, अभी काफ़ी बार आपने देखा होगा कि ही ट्रेंट बीच में आता है एंड क्लॉप बोल रहा हूँ अगेन, देखो मैं फिर से क्लॉप की बात कर रहा हूँ, एंड देन हेंडरसन गोज ऑन द विंग अ लिटिल. कल कल जो एक गोल भी आया था विलारियल के साथ, वो भी वैसे ही आया था. तो आई थिंक दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन दैट ट्रेंट प्रोवाइड्स, बट दिस आई थिंक इज द मोस्ट मोबाइल मिडफील्ड अकॉर्डिंग टू मी. भाई आपके लिए सर एलेक्स कैसे थे यार? देखो, सर एलेक्स फर्गुसन यार, देखो हमको, वी यूज टू हेट हिम बिकॉज ही वाज दैट गुड. ये रियलिटी है, राइट? तो मतलब वो, ही वाज द गाय हु मेड आवर चाइल्डहुड हॉरिबल. तो रेस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा था सर एलेक्स फर्गुसन के लिए, और अब व्हेन वी हैव ग्रोन अप और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बट वी हेटेड हिम बिकॉज ही वाज सो गुड. दैट्स द रियलिटी. That's just how it is. Mo Salah has joined the chat and he's asking how was my performance yesterday. Absolutely brilliant यार. I think ये सादियो माने जी हैं जो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक वाला सीन है इनका, थोड़ा चेंज करते रहते हैं. um, हाँ, ये भी जेरार और कोटिन्हो जिता दे तो उनका मैच सिटी से भी है शायद. हाँ, ये भी एक स्क्रिप्ट है. ये भी एक, लोग काफी बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में, कि जेरार्ड शायद सिटी को हरा दे. एस्टन विला के साथ उनका लास्ट मैच है. तो देखते हैं. What is your take on Mane winning the Ballon d'Or? Yeah, we'll take two, three more questions and then we'll close the live because I planned on not making this too long. So we'll just take a few more questions and बंद कर देंगे. यार देखो, टेक्निकली तो माने को जीतना चाहिए. इफ वी विन सम मेजर ट्रॉफी दिस सीजन, देन माने शुड बी वन ऑफ द नेम्स इन कंसिडरेशन. मेरा पर्सनली बेलोन डियोर के बारे में, मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर आप स्ट्रीम्स वगैरह देखोगे तो आप सुनोगे कि मैं बेलोन डियोर को उतना ज़्यादा एज अ फैन मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ. बट ऑब्वियसली प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई विल बी डिलाइटेड इफ ए लिवरपूल प्लेयर विंस द बेलोन डियोर, बिकॉज देन वी गेट क्लासिफाइड एज अ क्लब जहाँ पे प्लेयर्स आके बेलोन डियोर जैसे अवार्ड्स जीत सकते हैं, राइट? एंड प्लेयर्स के लिए आज भी बेलोन डियोर बहुत बड़ी बात है. मुझे ऐसा लगता है बेलोन डियोर थोड़ा मार्केटिंग एंड वैसा अवार्ड ज़्यादा बन गया है. बट ऑब्वियसली यार, अगर अगर सादियो माने जीतता है तो we'll be very happy. But I think they will, not give it to Sadio Mane whatever happens. भाई यार, अगर इंग्लैंड ने अच्छा नहीं किया वर्ल्ड कप में तो मैं गंजा कर देना. अरे यार, इंग्लैंड यार देखो, दे आर, मैं कैसे बताऊं यार, इंग्लैंड इज बेसिकली द, मतलब इतने, दे नेवर हैड बैड प्लेयर्स बट दे ऑलवेज परफॉर्म बैडली बिकॉज वो कभी सेट ही नहीं हो पाता. मतलब इट्स लाइक हैविंग अ फरारी एंड ड्राइविंग इट एट 40 किलोमीटर पर आवर. जब आपके पास सैंचो, ट्रेंट, स्टर्लिंग, जूड बेलिंगम, फोर्डन ऐसे प्लेयर्स हैं, इस तरह के प्लेयर्स हैं, और आप उस तरह का फुटबॉल खेलते हो, तो मुझे समझ नहीं आता यार इंग्लैंड मतलब करना क्या चाहती है. बिकॉज इफ यू लुक एट द प्लेयर्स अराउंड, डिफेंस में देख लो यार, ट्रेंट है, देन यू हैव वॉकर, फोर्डन है, स्टर्लिंग है, सैंचो है, केन है, इतने सारे प्लेयर्स हैं यार. एंड हाउ डू दे प्ले? इट्स रियली सैड टू सी. मतलब इंग्लैंड यार, पता नहीं, मुझे तो उतनी पसंद नहीं यार इंग्लैंड. See how Klopp made sure to point out it's not just him signing an extension, but his whole team. Absolutely, Klopp has been great at promoting his assistants, and it's not common to see at top clubs. यार जैसे मैं इसके ऊपर ना एक बात बोलना चाहूँगा, एंड अगेन अभी आप देखोगे ना, जब जब ब्रेंडन रॉजर्स had a
बैड सीजन ना, जब उसका सीजन बैड हुआ था, तो Colin Pascoe, who was his assistant manager, he was sacked, and Brendan Rodgers, he was sacked when he was on holiday, and Brendan Rodgers was okay with that. In fact, he was the one who did not even inform him. इसके बारे में एक आर्टिकल भी आया था कि he let the club people inform him and tell him that. क्लॉप के साथ आप ये चीज सोच ही नहीं सकते. क्लॉप, if you tell Klopp that we are sacking one of your staff without his approval, he will say, okay, fine, I'll just leave. Right? So, obviously, yeah, Jurgen is somebody that, absolutely brilliant in terms of what he does. Pranav says, I can't wait for so much suspense. I want to see Jesse March masterclass against City. यार देखो, सिटी भी बहुत अलग लेवल पे फुटबॉल खेल रही है. It's very tough to see City getting beat. Will it happen? I don't know. If Pep extends, this rivalry will extend. Yes, I agree. This is one of the great modern rivalries that we are seeing in football right now. If Pep extends his contract, then this will extend. And Arnav, as a neutral, people will enjoy that. But let's see. But let's see what happens. Okay, so एग्जैक्टली. सो रशिक, मैं वही बोल रहा था, इवन इफ वैन डाइक रिसीव्स वन मोर येलो इन सेकंड, ही विल नॉट मिस द फाइनल. वो रूल कब का चेंज हो चुका है. लास्ट प्लेयर टू मिस द फाइनल, वो रीजन वाज जाबी अगेंस्ट बायर्न. Precisely what I'm saying, that rule has been changed, that counter gets reset in the quarterfinals, I think. So it won't, even if Virgil gets a yellow card, he won't miss the final. वैसा है जहां तक मुझे पता है. And again, if I'm wrong, just let me know. Uh, with the way City is playing, it seems like we don't have much to do about the Premier League. Should we be optimistic about the Premier League right now? Yeah, why not? There was a time when we were 12, 14 points behind City. Abhi एक point रह गया है. And I'm sure that, as good as City are, they are constantly looking over their shoulder. One mistake and we capitalize. Or, so why should we not feel confident? Why should we not, why should we not feel optimistic about it? I think there is every reason to feel optimistic today, especially on a day like today. We have to feel absolutely optimistic. We'll take a few more comments and then we will close the live. If anybody wants to ask a question or something in the next 5 minutes, let's close this. Um, Yes, Thiago. What a guy, man. What a guy. What a signing he has been. I he the numbers he puts up, the confidence he exudes on the on the field is absolutely brilliant to see. So, but yeah, today is a very special day. Thank you everybody to whoever came on this chat. It was a quick one, and I know अभी एक football match है, दो football match है बड़े. West Ham versus Frankfurt and Man United versus Chelsea. So I'm sure you guys will go ahead and enjoy that. We have another reason to be happy. We have another reason to enjoy. Jurgen's red, and let's hope he delivers more. Thank you everyone for joining in, and up the Reds.